Follow me on Instagram account and subscribe to my channel for awesome great content. So let's start to this video. So नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज रॉबिन. सो कैसे हो मोटर लवर्स? आई होप सब लोग बढ़िया है. Triumph's most awaited Trident 660 has just been launched in India at just 6,95,000 rupees. That is the Triumph's most affordable naked motorcycle on sale in India. Trident के competitors में हाल ही में लॉन्च हुए Honda CB650R और Kawasaki Z650 में शामिल है और तीनों बाइक्स में मिडिल वेट सेगमेंट को कंपेयर करेंगे स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और प्राइस. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. First of all, the engine. The Triumph Trident is powered by the 660cc liquid-cooled 12-valve triple-cylinder engine that makes 80 bhp of power at the 10,250 rpm and 64 Nm of peak torque at the 6,250 rpm with 6-speed gearbox. Kawasaki Z650 is powered by a 640cc liquid-cooled 8-valve twin-cylinder engine that puts out the 67 bhp at the 8,000 rpm and 64 Nm of peak torque at the 6,700 rpm with 6-speed gearbox. And Honda CB650R is powered by the 649cc liquid-cooled DOHC inline 4-cylinder engine that makes 93.8 bhp at the 12,000 rpm and 63 Nm of peak torque at the 8,005 rpm with 6-speed gearbox. So the Trident offers less bhp than the CB650R but more than Z650. It weighs a full 13 kg less than the CB650R plus 90% of its torque is available between 3600 rpm and 9750 rpm. All the three bikes are BS6 compliant engine. Then talk about the hardware. The Trident is based on the tubular steel perimeter frame or suspension setup में 41 mm USD fork-strong shower up front and preload adjustable shower monoshock at the rear. टायर्स में फ्रंट 120 by 70 17-inch टायर्स और रियर में 180 by 55 17-inch टायर्स. ब्रेक में फ्रंट 310 mm ट्विन डिस्क विद 4 पिस्टन निसन कैलिपर और रियर में 255 mm सिंगल डिस्क विद निसन सिंगल कैलिपर्स. इसका कर्ब वेट अराउंड 189 kg, सीटेड अराउंड 805 mm and fuel tank about 14 liters. Then the Z650 gets a tubular steel trellis frame and the suspension setup includes the 41 mm telescope forks up front and the preload adjustable motor at the rear. टायर्स में फ्रंट 120 by 70 17-inch टायर्स और रेयर में 160 by 60 17-inch टायर्स और ब्रेक्स में फ्रंट 300 mm डुअल डिस्क विद निसन ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स और रेयर में 220 mm डिस्क विद निसन सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर. इसका कर्ब वेट अराउंड 191 kg, सीट हाइट अराउंड 790 mm and fuel tank around 15 liters. And the CB650R is based on the steel diamond type chassis and the suspension setup includes 41 mm USD front forks from Showa and the Showa preload adjustable monoshock. टायर्स में फ्रंट 120 by 70 17-inch टायर्स और रियर में 180 by 55 17-inch टायर्स. ब्रेक्स में फ्रंट 310 mm ट्विन डिस्क विद 4 पिस्टन कैलिपर्स एंड रियर में 240 mm डिस्क. इसका कर्ब वेट अराउंड 202.5 kg, सीट हाइट अराउंड 810 mm और फ्यूल टैंक अराउंड 15.4 liters. All the three bikes are dual channel ABS as a standard. Then talk about the features. Trident में LED headlamp, color TFT console, optional MyTriumph Bluetooth module, turn-by-turn navigation, GoPro control, phone and music control, optional quick shifter, 2 riding modes, rain and road, switchable traction control के साथ आता है. Then Z650 में LED headlamp, color TFT instrument cluster, Bluetooth connectivity मिलती है लेकिन इसमें traction control की सुविधा नहीं है. और CB650R में LED headlamp, LCD instrument cluster, switchable traction control that is HSTC लेकिन इसमें राइडिंग मोड्स या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है. Then talk about the colors. Trident 660 में 4 कलर ऑप्शन है: क्रिस्टल व्हाइट, सफायर ब्लैक, सिल्वर आइस एंड डाई ब्लू रेड, मैट जेट ब्लैक एंड मैट सिल्वर. Then Z650 में एक ही कलर ऑप्शन है that is the metallic spark black और CB650R में 2 कलर ऑप्शन है: मैट गन पाउडर ब्लैक मेटालिक एंड कैंडी क्रोमोस्फियर रेड. सो कौन सा कलर पसंद है तीनों ब्रांड में इन पर्टिकुलर ऑप्शन? लेट अस नो द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड टॉक अबाउट द प्राइस. द Triumph Trident 660 की कीमत 6,95,000 रुपए है. दैट मींस द Trident 660 प्राइस मेक इट्स द Triumph's most affordable offering in the country. इसकी विपरीत Kawasaki Z650 यहाँ सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत 6,18,000 रुपए है. Honda CB650R यहाँ सबसे महंगी मिडिलवेट सुपर बाइक है क्योंकि इसकी कीमत 8,67,000 रुपए है. ऑल दी प्राइस आर एक शोरूम पैन इंडिया बट शोरूम टू शोरूम प्राइस वैरी करेंगे एज दे ऑन रोड प्राइस. सो सबसे बड़ा क्वेश्चन हम कौन सी बाइक रिकमेंड करेंगे? इन द कंपैरिजन इज प्योरली बेस्ड ऑन द स्पेक्स ऑफ द बाइक एंड टू द एंड द
Triumph Trident seems like a clear choice in terms of the value of money proportion because it is the second most powerful bike here and also the second most affordable also. It also gets the most in terms of overall equipment. लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, that means a top most affordable bike with twin cylinder engine, so Kawasaki Z650 is the great option. And अगर आप refined inline 4-cylinder engine लेना चाहते हो with the trustable Honda brand, so CB650R is the another option. So do you agree with my opinion? Let us know in the comment section below. And that's it. So कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आए तो जल्द से लाइक कीजिए, सो डू लाइक. एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किए सो डोंट वेस्ट द टाइम, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन आल्सो. एंड ये वीडियो फैमिली फ्रेंड्स को ढेर सारा शेयर कीजिए. अगर डाउट हो इसी वीडियो में तो कमेंट में बताना जरूर. एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट राइट नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पोर्शन. मिलते हैं अगली वीडियो में. बी सेफ, ऑलवेज अ हेलमेट एंड मास्क आल्सो. टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय.